My dear students, good morning. I am Dr. Rakesh Mohan, Assistant Professor Physics, Department of Applied Sciences and Humanities, ABS IT Ghaziabad. Today we are going to know about what is diffraction of light, and diffraction of light is also in the syllabus in the unit that is wave optics. So in wave optics we need to read about two different areas. One is interference of light. Already we discussed the interference of light, and now we are going to discuss about diffraction of light and various phenomena related to it. So before we start knowing about what is diffraction of light, we will know about, और फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. पहले हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करेंगे. सो व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? So we'll define diffraction of light as bending of light through an obstacle is called diffraction of light. So how will we express this in terms of diagram? Let us draw the diagram so that you can understand the concepts very well. Suppose this is your light beam. This is your light beam, and this is also another light beam. Both the light beams are incident on a aperture. Aperture means a opening like this, and you are putting a screen here behind it. When you put a screen behind it, you will find that the light beam will start focusing straight like this. On a particular area, and also some of the beams have started bending and becoming incident on the screen on both the sides. फ्रॉम द एज से दोनों कोने में लाइट बीम बेंड होना शुरू होते हैं. एंड यू आर गेटिंग, सो ऑल दीज आर हैविंग वेरियस एंगल्स, θ1, θ2 and so on. Here also θ1, θ2 and so on. So you will see the light beam is not only incident straight on the screen. So we can write here, it is an aperture, this is screen, this is light. So here we'll see, or we have seen, that light beam is bending through an obstacle. कोई बाधा से लाइट बीम जब बेंड कर रहा है, उस फेनोमेनन को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं. So what is the details of diffraction? We now discussed about the diffraction phenomena, bending of light beam through an obstacle.
इसको और एक एग्जाम्पल से हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे दिस इज ए टर्च लाइट. So, sorry, this is a torch light which is having a particular aperture like this. So when you put a screen for distance in front of the torch light, then you will find that the beam is not only incident on the screen straight, but also they start bending and you will find the image of the focus. As you go further, जितना दूर आप जाएंगे इसकी फोकस उतना बढ़ता जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि at this place intensity is maximum. ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात हो रही है. ऑन बोथ दी साइड्स विल फाइंड दैट इंटेंसिटी decreases intensity. This means that intensity is maximum at the center and on both the sides intensity is decreasing. This is for white. Also for dark the case is same. जब आप छाया पर छाया देखते हैं, आप देख सकते हैं कि सेंटर मोस्ट हमेशा डार्क मोस्ट होता है और दोनों तरफ उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करते हुए जाता है. तो कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने डिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश किया. सो लेट अस नो अबाउट द टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन. What are the various types of diffraction? Diffractions are of two types. First one is Fresnel diffraction. The second one is Fraunhofer diffraction. In case of Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction, the basic difference is, let us note down the basic difference. Fresnel diffraction, source and screen both are at finite distance. इसका मतलब है कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शंस की एक्सपेरिमेंट में हमेशा सोर्स और स्क्रीन बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस. बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन? सोर्स एंड स्क्रीन आर एट infinite distance. So we can say source and screen are at infinite distance. तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की एक्सपेरिमेंट में हमेशा सोर्स और स्क्रीन दोनों नज़दीक में रहता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं. बट इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन दिस इज डिफरेंट. Both source and screen are at infinite distance. लेकिन हमारे पास कई तरकीब है जो इन्फिनाइट डिस्टेंस को हम फाइनाइट डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जाम्पल में ये बताना चाहूँगा. सपोज वी हैव ए सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स, and
it is at finite distance. So how to convert it in the case of infinite distance light beam? हमने सामने एक लेंस रखा, then all the light beams which are coming out of it, source will incident like this. This is suppose the axis of lens. Then these light beams after coming out of the lens becomes parallel. So this means these beams look like as if they are coming from any infinite source. So this is how you can change the concept of finite distance to infinite distance. Similarly, at the incident part also we can do the same. Suppose we are putting another lens here. Then all these beams which are coming out of it will incident on the other side of the lens at a particular point P on the screen. तो हम यहाँ भी infinite को finite कर रहे हैं. So this is the way how we can change the change of source and screen from finite distance to infinite distance. So in the case of diffraction, we are going to read about some of the experiments where diffraction is occurring, but only we will concern with Fraunhofer diffraction. Here in the syllabus you don't have any experimental setup related to Fresnel diffraction, and that too also the various topics we are going to read is first single slit experiment. Then we'll read about double slit experiment, and third we'll read about N slit experiment, and the other name of N slit experiment जिसका दूसरा नाम है diffraction grating. ये 3 ऐसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो सिलेबस में है और हमें पढ़ना है. उसके बाद कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम जानेंगे, जैसे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज रिजल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, then Rayleigh criterion of resolution, then we'll read about dispersive power, and specifically we'll find out
resolving power of diffraction grating. So in addition to the three experimental setup, Young's double slit experiment, single slit experiment, double slit experiment and n slit experiment, we'll read these additional topics also which are important so far as syllabus is concerned. तो आज हमने क्लास में डिफ्रैक्शंस के बारे में जाना, उसको डिफाइन किया, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, और अभी हम कौन कौन से टॉपिक हम डिफ्रैक्शन में पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ को भी मैंने बताया, जैसे सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एन स्लिट, रिजॉल्विंग पावर, डिस्पर्सिव पावर, और रिजॉल्विंग पावर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट डिफ्रैक्शंस ग्रेटिंग की भी हम डिराइव करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शंस को पढ़ेंगे, उसकी इंटेंसिटी पैटर्न को एनालाइज करेंगे, और डिफ्रैक्शंस पैटर्न कैसे निकल के आता है सिंगल स्लिट में उसको थियोरेटिकली एनालाइज करेंगे। और ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, आगे वाले क्लास में हम सिंगल स्लिट पढ़ेंगे। थैंक यू।